मिजाज बखैर, मिजाज बखैर. Mizaj bakhair means how are you? Mizaj bakhair, how are you? Mizaj bakhair, how are you? Its literal meaning is are you fine? Mizaj bakhair. Its literal meaning is are you fine? Mizaj bakhair, how are you? And its literal meaning is are you fine? मिजाज कैसा है, मिजाज कैसा है, हाउ आर यू. मिजाज कैसा है, आपका मिजाज कैसा है या मिजाज कैसा है, हाउ आर यू. आपकी दुआ है, आई एम फाइन. आपकी दुआ है मीन्स आई एम फाइन. आपकी दुआ है मीन्स आई एम फाइन. एंड लिटरल मीनिंग ऑफ आपकी दुआ है इज with your blessings. आपकी दुआ है, its literal meaning is with your blessing. आपकी दुआ है means I am fine and its literal meaning is with your blessing. आपकी दुआ है, I am fine. आपकी रिहाइश कहाँ है, आपकी रिहाइश कहाँ है, where do you live. आपकी रिहाइश कहाँ है, आपकी रिहाइश कहाँ है, वेयर डू यू लिव. आपका दौलत खाना कहाँ है, आपका दौलत खाना कहाँ है, वेयर इज़ योर होम. आपका दौलत खाना कहाँ है, वेयर इज़ योर होम. बट वी डोंट यूज़ दौलत खाना फॉर आवर ओन हाउस. If we ask someone about someone's house, then we use for house daulat khana. Why don't we say our house daulat khana? Because it means daulat khana means luxury home. So aapka daulat khana kahan hai? It means its literal meaning is where is your luxury home. Aapka daulat khana kahan hai? It means where is your luxury home, and that's why we can't say our own home, our home as daulat khana. We call in formal language we call someone's house, someone else's house as daulat khana, but not our own. So आपका दौलत खाना कहाँ है, where is your home. So we use daulat khana for someone's house, and what we use for our own house. Let's take an example. मेरा गरीब खाना लखनऊ में है, मेरा गरीब खाना लखनऊ में है. I live in Lucknow. मेरा गरीब खाना लखनऊ में है, I live in Lucknow. गरीब खाना means humble abode. Humble abode. So मेरा गरीब खाना लखनऊ में है. The literal meaning is my humble abode is in Lucknow. And that's why we don't use गरीब खाना for some other's house. We call our own house as गरीब खाना, but not others' house as गरीब खाना. So मेरा गरीब खाना लखनऊ में है. I live in Lucknow. That is my humble abode is in Lucknow. आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, Where are you from. आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, Where are you from. Its literal meaning is where do you belong to. आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, Where do you belong to. तो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, Where are you from. लखनऊ में आपका क़याम कब से है, लखनऊ में आपका क़याम कब से है. How long have you been in Lucknow. लखनऊ में आपका क़याम कब से है, How long have you been in Lucknow. अहले खाना तो खैरियत से हैं, अहले खाना तो खैरियत से हैं. How is your family.
اہل خانہ means family. اہل خانہ تو خیریت سے ہیں. How is your family? اہل خانہ تو خیریت سے ہیں. How is your family? گھر میں سب خیریت ہے. How are your family members? means گھر میں سب خیریت ہے. means how are your family members? Its literal meaning is everything okay at home? Is everything okay at home? گھر میں سب خیریت ہے. How is your family members? How are your family members? Or is everything okay at home? اب مجھے اجازت دیجیے. I go now. اب مجھے اجازت دیجیے. I go now. And literal meaning of اب مجھے اجازت دیجیے is now allow me to go. اب مجھے اجازت دیجیے. I go now. اور allow me to go. اب مجھے اجازت دیجیے. I go now. اور now allow me to go. اب میں آپ سے رخصت چاہوں گا. اب میں آپ سے رخصت چاہوں گا. Now I take leave of you. اب میں آپ سے رخصت چاہوں گا. اب میں آپ سے رخصت چاہوں گا. Now I take leave of you. Its literal meaning is now allow me to leave. Now allow me to go. اب میں آپ سے رخصت چاہوں گا. Now I take leave of you.